Good morning everyone. Welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, आप सबका स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर. That is about what to read for CAT. My dear students, we all understand that CAT is an entry point for all our dreams. Whether we have a dream to get into top B schools, whether it is in India or abroad. Okay, so the aptitude part like CAT or GMAT examination are very important. So I'll be focusing a lot on CAT, but whatever I'm discussing right now will be directly applicable to you for GMAT as well. Okay, so my dear students, as I was talking about that, it is an entry point to all your dream, whether getting into the top B school in the country or you want to get into the top, you can say, corporate houses. It is really possible by you to go there. Okay, by cracking this examination. Cracking this examination is not very tough. Cracking this examination is really a kind of systematic approach, because after all, this examination is checking your aptitude. Now, what is the meaning of aptitude? Aptitude is basically the skills what we have learned so far, whatever we have been trained so far. Okay, so that's the meaning of aptitude. Aptitude is not like, you can say, we train you for a day and then you are possibly, you can say, performing on the D day. ऐसा नहीं होता है. Aptitude is all about training over a period of time. So when you are trained over a period of time, due to your school, due to your college, due to your personal interest, okay, you are able to grow in a better manner as a candidate for a B school. Okay, so primarily this examination is checking what you have done in the past. Okay, now this is very interesting point when we say that whatever we have done in the past has some, you can say, or big implication in our preparation, in our scores. Yes, it has a big implication. So does that mean that, look, I have not done anything in the past as per my assessment, that in my school, in my college, I have not done anything? Okay, can I still improve? Yes, you can still improve. Okay, you can still improve, you can still compete with large number of other students and can possibly get a, you can say, good score. Okay, so it is like, let's say you have not done in the past so many years a training for cricket, but still you can practice for a year or two and you can very well do wonderfully well for your, you can say, cricket. So my dear students, first and foremost, okay, we have to understand that this is an aptitude based examination. So when you say aptitude, it is our natural ability to do something. This natural ability can be tweaked in, can be modified, can be changed. Okay, so that's what we are going to focus on. Okay, today's session is more about, you can say, developing a proficiency in English section. So whenever you can say I'm talking about English section, okay, it is a big weightage in your, you can say, CAT-like examination, or whether it is a GMAT examination, or whether it is NMAT or SNAP or CMAT or any entrance examination. It has a big weightage, okay, on an average 1/3. But not just 1/3 weightage, which is important here. Okay, what is important here is that, look, to get a particular score, so you want to get into top, you can say, colleges. Okay, you want to get into IIMs, let's say ABC or LIK. Okay, you want to get into those kind of IIMs. Possibly you need to have a very good score in your verbal front. Your verbal score will put you into the high pedestal. दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जो, यू कैन से, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड या वर्निकुलर मीडियम बैकग्राउंड से होंगे, उनके लिए भी अगर मैं ये बता दूं कि यू शुड नॉट हैव अ एट ऑल एन आइडिया कि भैया मेरे से तो नहीं होगा, बिकॉज आई डोंट हैव अ बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश, सो मैं IIM तक जा नहीं पाऊंगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. हाँ, ये बात सही है. There are data which tells us that large number of English medium students are coming and they are studying in the IIMs. But at the same time, there are large number of students who are not coming from English medium background. ठीक है, उसके बावजूद वो वहाँ पे पढ़ते हैं. ठीक है, बहुत सारे नॉन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, ठीक है, आर लूजिंग देयर गेम प्रायर टू द कैट. ओके, कैट के पहले ही वो गिव अप मार देते हैं.
तो वो फिर ऑब्वियसली आगे नहीं बढ़ पाते। पर बिलीव मी, कोई गिव अप मारने का पॉइंट नहीं है, मेहनत करना ज़रूरी है, मेहनत करेंगे सब लोग अच्छी जगह पहुंचेंगे। एक नेचुरल एबिलिटी है एक लैंग्वेज को समझने की, भले फिर आपकी वर्निकुलर लैंग्वेज हो या इंग्लिश हो, मेथड दोनों में सेम रहती है, ठीक है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ठीक है। सो दोस्तों, सबसे पहला मुद्दा मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगा कि इंग्लिश सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वहाँ पे एक प्रोफिशिएंसी गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप उस इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी गेन करोगे, आई बिलीव इट विल बी वेरी यूजफुल, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफिशिएंसी, उसके ऊपर मैं आता हूँ, पर बिलीव मी you have to develop certain capability. आज के सेशन में I'm going to focus a lot on this developing good habit for your, you can say, cat, okay, reading habit for cat, ठीक है। So I said developing a good reading habit. Forget about good word, reading habit is important, ठीक है, reading habit is important. Now why do I need, you can say, a good reading habit? दोस्तों, good reading habit इसलिए चाहिए क्योंकि entrance examination checks your natural ability to understand the given words, given languages, given paragraph, and try to see your logical thinking, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे पहला मुद्दा दे फोकस इज ऑन योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड vocab, ओके। आपको जो vocab आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, क्या आपको समझ आ रहा है क्या? दैट इज वॉट दे वॉन्ट टू चेक। दे वॉन्ट टू चेक द रेंज ऑफ vocabulary. It's not just limited group of words. They want to check your range of vocabulary, ठीक है। मतलब बड़ा रेंज है दोस्तों, ठीक है, बहुत छोटा रेंज नहीं है। 3000, 4000, 5000 शब्दों का रेंज है, which is huge. So large number of students like you who are preparing for CAT, ठीक है, many of them are not working on their vocab. They believe कि ओ CAT में तो vocab नहीं पूछा जाता है, there are no direct questions coming in the CAT from verbal, that is direct vocab, so why should I worry about my words? That's bad idea, that's a wrong thing, ठीक है। It is basically like asking कि look, I can say in data interpretation and logical reasoning there are no direct math question and there are no direct, you can say, question which are about tables, and so then why should I worry about learning my tables, ठीक है। और let's say cricket, when I want to play cricket is not all about muscles, है ना, so why should I train myself and go to the gym, ठीक है। That's the wrong thing, okay, because anyway cricket बोले या whatever the, you can say, competitive exam we are talking about, they require certain fundamentals. So whenever we talk about English, the fundamental is vocab, and they try to check your range of vocab, and they are not just trying to check the meaning directly, okay, so they want to check a lot of other thing as well, okay. So they want to check your, you can say, literal meaning, that is the dictionary meaning. They want to know your inferential meaning, ठीक है, and they want to know your evaluative meaning, okay. So what is the meaning of this, है ना भाई, वर्ड है उसका डायरेक्ट मीनिंग आपको पता होना चाहिए। वो वर्ड जिस कंटेक्स्ट में यूज हुआ उस कंटेक्स्ट से आप इन्फरेंस करने के काबिल होने चाहिए, कंक्लूजन करने के काबिल होने चाहिए कि ये वर्ड क्या किस लिए यूज हुआ, और इवेल्युएटिव मीनिंग हो गया, मतलब ये वर्ड क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ठीक है। सो दोस्तों, अगर आप वोकैब के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है, वोकैब के ऊपर ध्यान देंगे और आप वहाँ पे डेवलप करेंगे अपनी कैपेबिलिटी, बिलीव मी इट इज़ गोइंग टू गिव यू ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट। एंड ये पक्का है दोस्तों, भारत जैसे देश के अंदर द पीपल हु हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश आर अर्निंग more money, they get a lot of good jobs, ठीक है, and higher positions and good salaries. So why not focus on vocab, okay. So if I focus on vocab, ठीक है, it's a long term process, ठीक है, I need to spend daily 30-40 minutes working on my vocab, and possibly I will be in a position to, you can say, remove the clutter and go to a very precise meaning of the lot of you can say English sentences and the paragraph. The second part, you can say, I must focus on about my reading capabilities, reading in thought units, okay. So when I read, I must understand the thoughts of the author,
Okay, so when I read it, I want to understand the thought of the author, what is the idea the author is trying to put in front of me. So I need to develop my thoughts, okay, and those thoughts are put into different chunks. They are put into sentence, they are put into the paragraphs, okay. So I need to learn those sentences are telling us that, look, I must learn the art of grammar, understanding the grammar syntax, ठीक है, understanding the sentence and its elements, ठीक है, that is what are the parts of speech, एक sentence के अंदर parts of speech क्या होता है. Then we try to understand various basic sentence patterns जहाँ पे idioms, phrases, figure of speech, ठीक है, ये सब कनेक्ट होता है. क्लॉजेस एक दूसरे के साथ कैसे डेवलप होते हैं, ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है. Because once I know the syntax, once I know the style of writing and the various meaning to that, it becomes easy for me. Okay, so many times when we read passages, there are rhetorical questions are being provided to us, and then we need to know rhetorical questions have answer in it. Okay, we are not required to, you can say, gives, or the author is not required to give us separate answer for that, but those rhetorical questions have some, you can say, answer in it, and we have to understand, we have to assume that the answer to this question is given in the question, and thereby it puts us into an inference, in a particular kind of inference. So that is very important. Okay, that is the second part. The third front, in terms of reading part, I need to develop my capability is clear and logical composition of the text. So here I'm talking about logical composition. Okay, this is very important. What is the meaning of logical composition? Logical composition का मतलब हो गया that when I am reading, I am not getting any ambiguity. I am logically consistent. I know what I have to understand. ठीक है. So when author uses a lot of negative or double negative, ठीक है, so I need to know what is the argument he is putting, what are the preposition, what are the premises, what is a conclusion, what is an assumption, what is hypothetical proposition, ये सब का मतलब क्या होता है, so that I will be in a position to analyze the given situation in a better manner. So I will have to be master at deductive reasoning, inductive reasoning. ठीक है, I should be in a position to draw inference. I should be in a position to identify assumption. I should be in a position to recognize various factors which are contributing to a particular conclusion. ठीक है, I should be in a position to logically complete a paragraph. I should be in a position to give analogical argument. I should be in a position to compare lot of things. I should be in a position to know what is fact, what is inference, what is judgment. Very important front. So that specific learning is needed. So you may wonder, okay, sir, how do I learn all this art of, you can say, logic, grammar, vocab? क्या इतना बड़ा काम करना पड़ेगा? Yes, my dear students, that's what the reading habit involves. Reading habit is not just about कि मैं पढ़ रहा हूँ. Reading habit is about understanding vocab, understanding the grammar in it, understanding the logic in it. ठीक है, very important front. ठीक है, so दोस्तों, when I am learning all these things, when I read a lot, ठीक है, I will be in a position to develop my natural ability, ठीक है, to understand varieties of the question. That's what the examiner is trying to check. Examiner चाहता है कि आप एक पैराग्राफ के अंदर ये आइडेंटिफाई करने के काबिल होने चाहिए दैट व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ, व्हाट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ, व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द पैराग्राफ, व्हाट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द पैराग्राफ, व्हाट इज अ पासिंग नोट ऑफ द पैराग्राफ विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग हैबिट से डेवलप होगा, आप उसके बगैर नहीं काम कर पाएंगे. ठीक है दोस्तों, एक अच्छी रीडिंग हैबिट आपको नेचुरली ये सब स्किल डेवलप करेगी. हमें वो स्किल डेवलप करनी है. एक तरीका है हम प्रैक्टिस करें बहुत सारे क्वेश्चंस की, दूसरा तरीका है हम सही इंफॉर्मेशन ले उसकी और उसकी तैयारी करें. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम सही इंफॉर्मेशन सही तरीके से तैयारी कर पाएंगे, बिलीव मी, हमें कभी दिक्कत नहीं होगी कोई भी से इंग्लिश सेक्शन को क्रैक करने में. I believe the people who are master at, you can say, cracking this English section, they are the people who have worked hard on this fundamentals. ठीक है, पहली बार सब लोग ये सुनते हैं कि ये फंडामेंटल है, नॉलेज सबको है, पर बहुत कम लोग उसके ऊपर काम करते हैं. ठीक है दोस्तों, इट इज़ लाइक
in this today's information flooded world, everyone knows that what is the right method, but very few of them are actually executing on it. Very few of them are actually working on it. ठीक है. So my dear students, ठीक है, as a pro talent का you can say group, अगर आप प्रो टैलेंट के स्टूडेंट आप बन रहे हैं या आप यहाँ पे सेशन देख रहे हैं, ऑटोमेटिकली आप प्रो टैलेंट के स्टूडेंट हो चुके हो. मेरा मानना है कि आपको, है ना, ये चीज़ दिमाग में डालनी है कि लुक, आई हैव टू डेवलप, यू कैन से, अ गुड कैपेबिलिटी of reading part so that I will be in a position to execute on the D-Day in a right manner. I should be in a position to develop a good thought flow. Whatever the argument is being provided, I should be in a position to develop a good thought flow. ठीक है, उसमें से क्या मेन मुद्दा है वो मुझे आइडेंटिफाई होना चाहिए, so that whether it is RC questions, whether it is jumbled paragraph based questions, whether it is a critical reasoning based questions, I should be in a position to do it well. ठीक है. सो दोस्तों, आई शुड बी मास्टर, आई शुड बी ऑल राउंडर फॉर दिस इंग्लिश फ्रंट. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. साथ में आई नीड टू डेवलप अ गुड रीडिंग कैपेबिलिटी, जहाँ से मैं समरी करने के काबिल होना चाहिए. आई शुड बी इन अ पोजिशन टू, यू कैन से, डेवलप दिस एक्टिव रीडिंग कैपेबिलिटी. मैं मेंटली चीज़ों को समराइज करने के काबिल होना चाहिए, और जब मैं मेंटली समराइज कर रहा हूँ तो आई शुड बी इन अ पोजिशन टू इवन answer the different levels of the meaning of the sentence. दोस्तों, बहुत बार, ठीक है, एग्जाम में हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द पैराग्राफ, और व्हाट इज द ऑथर्स एटीट्यूड, और व्हाट इज ऑथर्स स्टाइल, और व्हाट इज द टोन ऑफ द, यू कैन से, ऑथर. नाउ दिस आर द इवेल्युएटिव फ्रंट. आपको इवेल्युएट करना है, आपको बताना है कि ऑथर का टोन पॉजिटिव है, ऑथर का टोन नेगेटिव है. ठीक है, ऑथर किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है. ठीक है, क्या पूरा का पूरा नेगेटिव है, क्या वो थोड़ा बहुत कॉशन दे रहा है, न्यूट्रल साइड पे जा रहा है, क्या कर रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो दोस्तों आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, एंड देयर बाय इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू डेवलप अ गुड रीडिंग हैबिट फ्रॉम दी CAT exam point of view. So when I am talking about MBA entrance or GMAT, ठीक है, so you have to develop a good reading habit. This good reading habit comes with a capability of vocab, grammar and logical composition. If you master at this, I think this is very important. Now once you know that it is important for me that in the exam I need to develop this capability, and this capability can be done only through good reading habit. The next point is that deciding on what to read. Okay, now that is important, that I have been, you can say, very comfortable. So some of you may say ki, yes sir, I agree with you, I buy in your idea of that. Look, if I want to crack examination like CAT or GMAT, ठीक है, I need to be good at, you can say, my capability on vocab, grammar, logical composition. That's true. ठीक है, so tell me what to read. Yes, I will tell you in few minutes. ठीक है, and then sir, yes, you tell us that what to read. Can you help us with another method or another way, which is saying that how do I commit myself for this lifelong learning? Okay, let me come back to this, and later on I'm going to take your question answer. This is what I'm going to handle this particular session. So developing good reading habit for CAT. So दोस्तों, it is very important that reading skills are very crucial, and I must develop good command over my reading skills. Okay, ठीक है. Now in order to develop good reading skills, it must be converted into an habit. I must enjoy reading, ठीक है, and I must be in a position to practice. So many times we are saying कि look, हमें रेगुलर होना पड़ेगा. ठीक है, दूसरा हमें मज़ा भी आना चाहिए, और तीसरा हमें प्रैक्टिस भी करना चाहिए. सो वी आर एक्चुअली आस्किंग लॉट ऑफ थिंग इन वन गो. ओके, आई एम एक्चुअली टेलिंग यू लॉट ऑफ थिंग इन वन गो. वन इज आई एम आस्किंग यू टू डेवलप हैबिट. Okay, so I want you कि without even, you can say, daily motivation, you must inculcate certain habits. So let's say as we wake up in the morning, we go for bathing, ठीक है, whether we like it or not, we go for bathing, ठीक है, so that's an habit. Okay, so we eat food, whether we like a particular food or not, we do it. Okay, so that's what the meaning of habit is. ठीक है, whether you like reading or not,
You must do it. It's a part and parcel of your habit. Number one. Number two, obviously, we can't always, again, say, do something which we don't like. Many times we have to go to certain things which we like. So we must enjoy out of it. Okay, so how do we enjoy? Okay, in what manner I develop my interest to this particular front, that is what we are going to discuss about it. Okay, and then at the end of the day, practice. Okay, practice from the exam point of view, because at the end of the day I have to focus on my exam as well. Okay, so how do I do it? Number one, I always read for the content. I don't just read for the sake of reading. Okay, so whatever is paragraph in front of me, जो भी मेरे सामने पैराग्राफ है, मैं पढ़ता जाऊँ, मुझे पता भी नहीं हो कि क्या मुद्दा है, तो कोई फायदा नहीं है. ठीक है, many times many of us are passive reader. We read. Okay, हम पढ़ते हैं, पर हम क्या पढ़ते हैं हमें नहीं पता. If someone will come out and will ask you कि भाई बताओ क्या पढ़ा आपने, give me summary, give me conclusion, give me क्या क्या अलग अलग मुद्दों के ऊपर बात हुई, many of us are saying कि पता नहीं, पढ़ लिया, मुझे समझ में आ गया, I am not able to articulate. दोस्तों, आप जब कंटेंट के लिए पढ़ते हो, ठीक है ना, आप पैसिव रीडर नहीं हो. ठीक है, आप हो एक्टिव रीडर. ठीक है, आप जब एक्टिव रीडर हो तो आप चीज़ें याद करोगे, मेमोरी में डालोगे. ठीक है, आप उसको समझने की कोशिश करोगे. ठीक है, आप उसको कनेक्ट करोगे. एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ कैसे कनेक्ट हुआ, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के साथ कैसे कनेक्ट हुआ. आप इवेल्युएट करोगे कि ऑथर का टोन क्या है, ऑथर किस फेवर में जा रहा है, वो आप से जानने की कोशिश करोगे. ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यू विल ऑल्सो रीड, यू कैन से, डाइवर्स टॉपिक्स. ठीक है, आप अपने को जो पसंद है उतना ही नहीं पढ़ोगे. यू मे पॉसिबली रीड फिलोसॉफी. ठीक है, यू मे पॉसिबली रीड पैसेज कमिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी, यू मे रीड पैसेज कमिंग फ्रॉम इकोनॉमिक्स, यू मे रीड पैसेज कमिंग फ्रॉम साइकोलॉजी. ठीक है, यू मे रीड पैसेज कमिंग फ्रॉम लेट्स से स्पोर्ट्स. ठीक है, और गवर्नेंस. ठीक है, और पॉसिबली राइट्स के बारे में. ठीक है, और पॉसिबली आर्ट्स के बारे में. ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के बारे में. दोज काइंड ऑफ थिंग, सो मेनी थिंग्स यू रीड. ओके, यू पिक अप अ न्यूज़पेपर कंप्राइज ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग. ठीक है, एंड दे आर बेसिकली throwing everything in front of us, so we should develop that capability. Okay, number one. Number two, when you read, ठीक है, you always focus on unfamiliar words, or even you focus on familiar words and try to see how those familiar words are used in a different way. Okay, many times some simple words are used in a very specific manner and the meaning changes. Okay, very important. Okay, so normal word like you can say adventure. Okay, adventure. So let's say, for example, if it is used in economics front, they say कि look, the finance minister's adventures with respect to fiscal policies are not giving us a lot of benefit. So then it means कि भाई हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स, ठीक है, हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कहीं ना कहीं again से कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो पॉलिसी के मुताबिक नहीं करना चाहिए, थोड़ा रिस्की है वो काम कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट वे वी यूज वर्ड एडवेंचर. ठीक है, बट इन अ डिफरेंट कंटेक्स्ट वी शुड बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द मीनिंग टू दैट. सिमिलरली, ऑब्वियसली वी फोकस ऑन अनफेमिलियर वर्ड्स एज वेल. वी लर्न टू अप्रिशिएट द कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में बात हुई. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देर आर सर्टन राइटअप्स कमिंग फ्रॉम यू कैन से डिस्कसिंग अबाउट लेट्स से मिस एडवेंचरिज्म ऑफ Vladimir Putin. When Vladimir Putin is trying to divide Ukraine and he sees Ukraine not as a state but it sees as a statelet. Okay, so I should know that what is the idea of statelet, what is a statelet, and I should be in a position to appreciate. When I say appreciate, it doesn't mean that you say oh it's good. No. Appreciation का मतलब it's good ऐसा नहीं है. Appreciation का मतलब है that you are trying to say कि look, in what context the entire idea is presented. ठीक है, that's very important. You also become familiar with the various literary devices like you can say varieties of the figures of speech, style of you can say presentation of the argument, and you don't rush to read it. You go at a slow pace. ठीक है, I believe you can say once you engage
yourself with, you can say, developing this capability, धीरे धीरे शांति से slowly अगर आप पढ़ोगे धीरे धीरे, in a matter of a month, 2 3 months, 4 months, you will be in a position to master the art of reading skills. ठीक है, so I think that is very important. Okay, so if I have to, you can say, develop good reading habit, ठीक है, I should have a good reading material in handy way. Okay, so मेरे हाथ में तुरंत कोई ना कोई किताब होनी चाहिए, मेरे आजू बाजू कोई किताब होनी चाहिए, जस्ट लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आई एम रीडिंग, आजकल आई एम रीडिंग दिस फ्रांसिस फुकुयामा, ठीक है, who talks about state building and in 21st century what are the challenges people have about state building. ठीक है, so you must have some subscription of a newspaper, you must have a book handy with you, you must have a library subscription, you have a e-reader, whatever method, ठीक है, you have, but you should have it. Very important है ना. अगर आप विराट कोहली हो, आपको क्रिकेट खेलना है, तो आपके पास कोई ना कोई मटेरियल तो हैंडी होना चाहिए ना. अगर आपके पास मटेरियल हैंडी नहीं है, आप क्रिकेट खेलना चाहते हो, आपके पास ना क्रिकेटिंग गियर है, आप कैसे प्रैक्टिस करोगे. ठीक है, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेड. दोस्तों ये ध्यान रखना. एट द सेम टाइम फाइंड वेज टू कनेक्ट रीडिंग टू योर एवरीडे लाइफ. वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप पढ़ते हो तो आप उसको डे टू डे लाइफ में कनेक्ट करने के काबिल होने चाहिए. ठीक है, सो व्हेन आई एम रीडिंग दिस बुक आई ऑलवेज, यू कैन से, थिंक अबाउट कि भैया आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वो 21st सेंचुरी का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें किस तरीके से गवर्नेंस को काम करना चाहिए. ठीक है, किस तरीके से भाई व्लादिमीर पुतिन को काम करना चाहिए, जो बाइडेन को काम करना चाहिए, मोदी साहब को काम करना चाहिए. व्हाट इज द कन्वेंशनल विजडम दे अप्लाई, व्हाट आर द इंस्टीट्यूशन दे यूटिलाइज फॉर देयर ओन बेनिफिट, वेयर दे आर गोइंग रॉन्ग इज व्हाट आई अप्लाई. ठीक है, एंड देन you try and make a schedule every day. You keep a specific time to watch, let's say OTT. Exactly, you keep a specific time for reading. You must have a good reading time. Daily, some time should be fixed. For me, the good reading time is every day in the morning. ठीक है, आई पॉसिबली वेक अप एट सम अराउंड, यू कैन से 6:30 7 o'clock के आजू बाजू. ठीक है, सो दैट्स अ काइंड ऑफ टाइम आई, यू कैन से, वेक अप. सो आई यूज दैट टाइम बिटवीन 7 to 8 टू रीड, विच इज पॉसिबली न्यूज़पेपर, possibly magazine and the book. Okay, that's what I try to keep. So I maintain that particular front. So once you know what to do, you decide on the next part what to read. And I am keeping myself very focused towards CAT, towards MBA entrance, towards GMAT, towards CAT, towards NPAT, towards ZAT, all other MBA entrance examination I'm talking about. Okay, so one very interesting thing is, okay, take recommendation from your friends. Ask your friends, can you suggest me a good reading book? Okay, it's a wonderful method of taking cue from your friends. Word of mouth is giving you a lot of motivation. ठीक है, sometimes recommendation of your friend, ठीक है, has lot of connection with your friends, you can say, मतलब friends perception or your perception about your friend, ठीक है, will help you a lot in terms of reading a book. ठीक है, अगर मुझे कोई दोस्त ने बोला कि ये किताब पढ़, ठीक है, मुझे ये बोला उन्होंने, ठीक है, सो वाइल आई रीड इट आई डेवलप लॉट ऑफ कंटेक्स्ट विथ व्हाट माय फ्रेंड्स सजेस्टेड टू मी. ठीक है, और व्हेन आई गेट दिस, यू कैन से, बुक सजेस्टेड फ्रॉम सम ऑफ दी, यू कैन से, फेमस जर्नलिस्ट, ठीक है, सो इट हेल्प्स मी कि अच्छा वो आदमी क्या सोचता होगा. ठीक है, यू मस्ट रीड, यू कैन से, क्लासिक्स एज वेल. Okay, because when you talk about classic, it's all about good writing ability. ठीक है, so let's say you read something from, let's say, Amitav Ghosh, okay, or you read something like Shakespeare, है ना, you read something from Shakespeare, or you read something from some other famous writer. ठीक है, believe me, it is experience in itself. ठीक है, and it is going to give you so much deep understanding about the situation at that point in time. Obviously in the context in which they have written, so it is going to give you a lot of benefit, but more importantly their writing style is so great, so good, so sophisticated, and it is valued by large number of societies, so thereby it helps you to understand it. Okay, so that's very important. At the same time, when you read a book, you don't just read a book. ठीक है, after reading a book you try to read critics. What are they saying about the book?
try to take a review on your own or possibly take a review from someone कि ये किताब के बारे में लोग क्या बोलते हैं. आपका पर्सपेक्टिव और इम्प्रूव होगा. यू रेड इट, यू डेवलप इट्स ऑन इन योर ओन वे, इन योर ओन पर्सपेक्टिव. ठीक है, नाउ यू ट्राई एंड सी फ्रॉम सम अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव एंड इट हेल्प्स यू. ठीक है, सो व्हेन यू रीड व्हाट द क्रिटिक्स आर सेइंग, इट गिव्स यू लॉट ऑफ बेनिफिट. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो दोस्तों मतलब दैट इज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन. सो बिग पॉइंट इज कि सर सजेस्ट करेंगे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए. श्योर. ठीक है, सो दोस्तों अगर आप बिगिनर लेवल पे है, ठीक है, आप एकदम शुरुआत कर रहे हैं, सो व्हाट काइंड ऑफ बुक्स आर नीडेड फॉर यू. सो पॉसिबली यू मे स्टार्ट लाइक सेल्फ हेल्प बुक. ठीक है, आप कुछ सेल्फ हेल्प बुक जो आपको मदद करे वैसे बुक ले सकते हैं, जैसे द अल्केमिस्ट बाय पालो कोएल्हो. वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ना, मजेदार सी बुक है. ये कुछ सजेशन है, आपकी मर्जी, आप इसके जॉनर की कुछ किताबें पढ़िए. आप ऐसा भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे स्पेसिफिक नाम बता रहा हूँ, आप उसको जॉनर पे ले जा सकते हो. ठीक है, कि भैया सेल्फ हेल्प की कोई भी बुक, आपको शिव खेरा पसंद है, एपीजे अब्दुल कलाम पसंद है, आपको डेल कार्नेगी पसंद है, ठीक है, आपको अगेन से डेनियल हॉफमैन पसंद है, आपकी मर्जी. ठीक है, आप जो पढ़ना चाहे पढ़िए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ हेल्प बुक. ठीक है, यू मे पॉसिबली गो टू सर्टन काइंड ऑफ अगेन से पॉलिटिकल एलिगरी. पॉलिटिकल एलिगरी, वेरी इंपॉर्टेंट वन. यस और नो, जैसे एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल, वन ऑफ द वेरी फंडामेंटल बुक. गिव्स यू नॉवल का पर्सपेक्टिव कि ये नॉवल है ऐसा लगेगा आपको, बट व्हेन यू ट्राई एंड रीड इट, रीड इट 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इट इज ट्राइंग टू कमेंट ऑन सर्टन काइंड ऑफ policies, certain kind of political thought processes, and those thought processes are good, bad, ugly, उसके बारे में बात हो रही है. बहुत मजेदार है. ठीक है, प्लीज उसको देखिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, देन यू मे पॉसिबली इज मे बी इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स. ठीक है ना, नॉवेल्स लाइक कैच 2022, मजेदार है कैच 22. ठीक है, मजेदार सी किताब है. ठीक है, यू मे बी इंटरेस्टेड इन लेट्स से सम काइंड ऑफ थ्रिलर, सम काइंड ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ स्कैम्स बीइंग डन, कैसे लोगों को उल्लू बनाया जाता है. ठीक है, यू मे पॉसिबली गो थ्रू व्हाट यू कैन से चित्रा रामकृष्णन हैज डन विथ एनएससी, आपको उसके बारे में जानने की इच्छा हो. ठीक है, सो पॉसिबली सच काइंड ऑफ नॉवेल्स विल गिव यू अ ग्रेट आइडिया. यू मे पॉसिबली गो थ्रू हैरी पॉटर, which is highly fictional, which is imaginary kind of world. You may possibly go to some kind of, we can say, non-fiction book like Rama Bijapurkar's book about understanding Indian consumers. ठीक है, it says we are like that only, है ना, we are like that only. हम जैसे भी है, हम हैं हिंदुस्तानी. That is what the idea is saying, that understanding the logic of consumer India. ठीक है, it is going to help you that who are we as an Indian, collective Indian, हम क्या करते हैं. ठीक है, तो दोस्तों एक तरीके से कंज्यूमर्स क्या सोचते हैं, किस तरीके से मार्केटिंग के लोग कंज्यूमर्स को देखते हैं. ओके, ठीक है, किस तरीके से एडवर्टाइजिंग के लोग उनको देखते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट बुक, वंडरफुल बुक. इट इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ बेनिफिट. ठीक है, बहुत फायदा होगा. देन यू मे पॉसिबली ट्राई टू रिव्यू द एंटायर you can say history. You want to know कि कैसे civilization आगे बढ़ी, क्या civilization में हुआ. You may not be interested in history, but you may be interested to see, you can say, analysis of various human civilization, the efforts put by them. ठीक है, what has happened, how did we reach to this situation, and possibly you can say what will be our future. You want to predict about future, you want to see about future. Alvin Toffler as a futurologist will help you a lot. तगड़ा बेनिफिट देगा आपको. एल्विन टॉफलर इज गोइंग टू गिव यू अ वंडरफुल यू कैन से गाइडेंस अबाउट कि भैया पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है. ठीक है, क्या दुनिया चल रही है, उस दुनिया में कैसे कैसे शौक आते हैं, उन शौक में कैसे तैयार रहना पड़ेगा, उन शौक के द्वारा क्या चेंजेस आएंगे, क्या आप तैयार हैं अपनी लाइफ में बड़े बड़े शौक लाने के लिए और उस शौक से उभरने के लिए. दैट इज व्हाट द आइडिया इज. You want to know something about the very current and contemporary issues, then you may possibly read Sheryl Sandberg. Sheryl Sandberg says that lean in. Okay, so in today's ever-changing world, ठीक है, as a graduate student, what changes you need to adopt?
ठीक है, and that too in a new context, not that in a old context. You will not go through those old methods कि क्या करे कैसे करे, एकदम fresh methods, ठीक है. You are going to, you can say, focus on how do you find out your first job, how do you negotiate your first salary, ठीक है, how do you can say, focus on developing your friends, ठीक है, you focus on who owns you, what will you own, ठीक है. उन सब के बारे में बहुत तगड़ी बातें, बहुत अच्छे अच्छे विचार शेरिल सैंडबर्ग लिखती है. शेरिल सैंडबर्ग आप सबको पता है कि जैसे शी इज़ द COO ऑफ Facebook, which is now Meta. So thereby, these are the kind of people you are going to read. Jeffrey Archer, a wonderful guy. He puts up a very interesting situation. लंबी स्टोरी सुनाते हैं और स्टोरी में हर छोटी छोटी जगह पे ऐसा तगड़ा you can say फोकस रहता है. जैसे बोलते हैं ना बिंज वॉच करते हो, ऐसे आप बिंज रीड करोगे when you pick up Jeffrey Archer. And when you pick up, it will not मतलब it will not give you a single time where you will keep aside that book. बुक नीचे रखने की इच्छा भी नहीं होगी. खाना खाते 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 है ना, कुछ भी काम करते करते यू विल ऑलवेज लाइक टू रीड दिस काइंड ऑफ बुक्स. सो दिस आर फॉर द बिगिनर्स, है ना. दिस काइंड ऑफ बुक्स आर फॉर द बिगिनर. नाउ वी टॉक अबाउट द बुक्स फॉर मॉडरेट लेवल. द पीपल हु हैव रेड सर्टन बुक्स, हु हैव फंडामेंटल्स, दे नो कि भैया ये किताबें पढ़ी है उन्होंने या उनको कुछ आइडिया है, एंड नाउ दे विश टू डू समथिंग मोर देन दैट. Okay, they wish to do something more than that. Okay, so then these are the books for moderate level. These books may be lengthy, may have little complex ideas, okay, and they have a lot of, you can say, challenging, you can say, analysis coming in front of you. So lengthy, challenges, okay, and more analytical, more logical arguments are being put forward. So my favorite is Mr. Ramchandra Guha. You may possibly develop your favorite, you can say, Mr. Ramchandra Guha. Ramchandra Guha has studied from IIM Kolkata and he became interested in history, ठीक है, and he started to write a lot of things about history, cricket, environment के ऊपर बहुत लिखते हैं वो. उनके ये 3 फेवरेट एरिया है, ठीक है. उनमें से my favorite area from Ramchandra Guha is the books on history. He writes about India after Gandhi. Okay, I am extremely, you can say, passionate about the Indian history after Gandhi. What has happened? ठीक है. In fact, I have developed a very good podcast, ठीक है, about Indian history, ठीक है, after you can say Gandhi. Okay, if you are interested, you can possibly comment on Telegram to me, ठीक है. Yes, you can join our Telegram channel, ठीक है. We have provided wonderful support on Telegram. You want to join Telegram channel, feel free and join it. It's very easy, ठीक है. एक क्लिक है, फ्री में ज्वाइन करिए, एंड वी आर गोइंग टू गिव यू वंडरफुल सपोर्ट. सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू नो द हिस्ट्री आफ्टर गांधी, आई हैव डेवलप अ गुड पॉडकास्ट विच इज अ सीरीज ऑफ सम अराउंड 45 पॉडकास्ट, ठीक है, ऑफ 5 to 7 minutes, ठीक है. वंडरफुल कंटेंट आई हैव डेवलप्ड, ठीक है, थैंक्स टू रामचंद्र गुहा. ओके, देन देयर इज गांधी, द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड. सो इट इज अबाउट 1914 to 1948. गांधी जी जब इंडिया में आए तब से लेकर क्या हुआ उसके बारे में बहुत तगड़ा उन्होंने बात करा है. सो इट्स अ वंडरफुल वन. द नेक्स्ट वन ऑन माई लिस्ट इज युगांता बाय इरावती कार्वे. You want to understand the arguments, you want to understand the logical, you can say, how critically evaluation can take place of something very important parameters, something very important to our Indian society. Indian society के लिए महाभारत is an epic poem and it is well respected, it is sacrosanct. But here Iravati Karve uses her, you can say, very powerful analytical skills, logical skills, and dissects each and every character and identifies that what are the good things with each character and what are not so good things with the character. Wonderful, you can say, book by Iravati Karve. You must read it. It is going to improve your argumentative skills. It will help you to understand Mahabharata in another way. Okay, wonderful. So next time you want to discuss with someone, you will be in a position to do that. Okay, it is going to be very useful. Okay, then comes Amartya Sen, who writes about Indian culture, Indian history, Indian identity. Wonderful writing. He says the argumentative Indian. Remember, argumentative Indian doesn't mean that Indians are argumentative. No, it means what are the prepositions, what are the premises which we Indian believe in.
ठीक है, व्हाट कंक्लूजन इट ड्रॉस, ठीक है, वेदर दैट कंक्लूजन इज अग्रीएबल टू इंडिया और नॉट, ठीक है, व्हाट इज आवर हिस्ट्री, व्हाट इज आवर थॉट प्रोसेस. इट इज वंडरफुल, इट्स अ स्टिम्युलेटिंग बुक, इट इज गोइंग टू चेंज योर थॉट प्रोसेस. वंडरफुल वन, ठीक है. देन my favorite is Amitav Ghosh. You can pick up any book by Amitav Ghosh and it is going to be a game changer for your, you can say, reading. So I recently read The Shadow Lines. That's a wonderful book for me, ठीक है, मुझे बहुत मज़ा आया, ठीक है. Then I also read another book, है ना, which is, I think it is not there, it is not there, yes, but these are the kind of books which are wonderful one. Amitav Ghosh को आज से करीबन 2 साल पहले ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था. ज्ञानपीठ अवार्ड इज द हाईएस्ट अवार्ड इन इंडिया फॉर लिटरेरी एक्टिविटीज, ठीक है. ही राइट्स अबाउट वंडरफुल एक्टिविटीज ऑफ हिज टाइम, ठीक है. यू मे पॉसिबली रीड द खुशवंत सिंह, द फेमस राइटर, ठीक है, जिनकी वजह से वी आर एबल टू गेट दोस, अगेन से संता बंता के जोक्स, है ना, सरदार जी के जोक्स मिलते हैं, विच इज़ ओके, है ना. हम सरदार जी के जोक्स के ऊपर कुछ कमेंट नहीं लगा रहे हैं, बट दिस गाय इज, मतलब बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें लिखते हैं इन अ वेरी एक्सप्लिसिट मैनर. ही राइट्स लॉट ऑफ थिंग. यू मे पॉसिबली पिक अप समथिंग बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, और सत्यजीत रे, ठीक है, और यू कैन से मानक बंदोपाध्याय, ठीक है, और अनिर्बान दास, ठीक है, और एनीवन you can pick up this kind of one. I believe that's a wonderful set of books available, ठीक है. You may possibly pick up some non-fiction book like The World is Flat, The Brief History of 21st Century. 21st Century का ये हिस्ट्री ये बताने की कोशिश करते हैं. बहुत ही मज़ेदार सा आइडिया है. थॉमस फ्रीडमैन बात करने की कोशिश करते हैं, बहुत तगड़ा है, ठीक है. एट द सेम टाइम यू कैन पिक अप फ्रीकोनॉमिक्स, ठीक है, हाउ you can say there are hidden sides of everything which we are you can say entering into. हर चीज़ का एक हिडन साइड होता है, हर चीज़ हमें अमेज कर सकती है. कैसे फ्रीकोनॉमिक्स है, मतलब इकोनॉमिक्स कैसे फ्रीकी हो सकता है, वो यहाँ पे बताने की कोशिश करी है. वंडरफुल, ठीक है. एंड सिमिलरली ये भाई साहब बोल रहे हैं कि कैसे लिटिल थिंग कैन मेक अ बिग डिफरेंस, ठीक है. द टिपिंग पॉइंट, है ना, एक इंटेलिजेंट आर्टिकुलेटिव आर्ग्यूमेंट है, थॉट प्रोवोकेटिव है. आप बिल्कुल उसको पढ़िए, बहुत ही मज़ेदार सी है, ठीक है. देन यू मे रीड, यू कैन से, रिचर्ड थेलर साहब गॉट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स आज से करीबन 2 साल पहले. एंड ही रोट अ वंडरफुल बुक अबाउट हाउ टू इम्प्रूव आवर डिसीजंस, अबाउट आवर हेल्थ, अबाउट वेल्थ, आवर हैप्पीनेस थ्रू अ मेथड कॉल्ड नज. कैसे नज करना, नज इज स्लाइटली सपोर्ट करना, स्लाइटली उस बंदे को पुश करना, दैट इज कॉल्ड नजिंग. वंडरफुल वन, ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है. सो दोस्तों, ये थी मेरी तरफ से कुछ सजेशन. अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे कुछ एक्सपेक्ट करना चाहते हो तो ऑब्वियस है कि भाई अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे हो तो आप ऑब्वियसली ये वीडियो तो नहीं देख रहे होंगे. फिर भी अगर आप देख रहे हो और अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे जानना है कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी ऑन procatindia@gmail.com. ओके, procatindia@gmail.com के ऊपर आप मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू दैट. सो नाउ आई विल फोकस ऑन फॉर द नेक्स्ट 5-10 minutes डिस्कसिंग अबाउट मेकिंग रीडिंग अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है. चलिए समझते हैं दोस्तों. सबसे पहली चीज़ कि अगर मैं ये देखूं कि मुझे रीडिंग लाइफ लॉन्ग रखनी है, जिंदगी भर मैं पढ़ता रहूं, ऐसा कैपेबिलिटी रखना है, तो आई मस्ट डेवलप a kind of, you can say, my support structure, my network which is connected to this book. Okay, so I need to have some, you can say, useful, you can say, book related program जहाँ पे मैं दोस्तों के साथ बुक स्वैप कर सकूँ, ठीक है, उनसे बुक बोरो कर सकूँ, लाइब्रेरी में से बुक लेके आ सकूँ. मेरे पास नेटवर्क होना चाहिए, मेरे पास एक अच्छे ग्रुप होने चाहिए जहाँ से हम एक दूसरे के साथ बुक स्वैप करें, एक दूसरों को हम शेयर कर सके, ठीक है, ताकि एक दूसरे से हम बात कर सके कि भाई करना क्या है, ठीक है. गो टू बुक फेस्टिवल्स, गो टू बुक फेयर, ठीक है, गो टू बुक शॉप्स, try and collect the books, ठीक है ना. इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द पीपल, टू नो मोर अबाउट द बुक्स, टू लर्न पीपल, टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, ठीक है, आज का क्या नई किताबें आ रही है ना, लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड बुक फेस्टिवल. कीप अ गुड रीडिंग ब्लॉग, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आप कोई अच्छी सी चीज़ ले सकते हो
विच इज़ लाइक medium.com, ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, या यू मे पॉसिबली गो टू द प्रिंट, ठीक है, द वायर, ठीक है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, और यू मे पॉसिबली फॉलो सम यू कैन से गुड यू कैन से राइटर लाइक मतलब शशि थरूर और लेट्स से रुचिर शर्मा, ठीक है, यू मे पॉसिबली पिक सम ऑफ देम, बट मेंटेन अ गुड रीडिंग ब्लॉग, very important, okay, ठीक है, and at the same time try to learn different languages as well. You enjoy reading in your own language, so that is, let's say, you wish to improve your English, so thereby you read English, but at the same time read in your own vernacular language. आप जो भी language के हो, whether you are coming from Hindi or Gujarati or whether Marathi or Malayali or whether it is Tamil, मतलब Tamil or Telugu, ठीक है, whichever it is, make sure that you read in that language as well. Okay, it is going to be very important because it is going to give you freshness, it is going to give you some excitement, it is going to give you some new thoughts. Wonderful, बड़ा फायदा होगा, so thereby it is going to be very useful to you. Okay, so I hope this session is comfortable for you. I gave a reasonable idea that how and what to read, in what manner you have to focus on developing a good reading habit. By developing a good reading habit, you are developing your natural ability to read faster, ठीक है, your natural ability to answer question faster. Believe me, in CAT examination, those students who are the topper, वही स्टूडेंट्स टॉप करते हैं जिन लोगों का प्रोसेसिंग तेज़ है, वो पढ़ के फटाफट प्रोसेस कर पाते हैं, वो लोग ही आगे बढ़ते हैं. सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, ठीक है. तो मेरे साथ ये सेशन अटेंड करके आपको बड़ा फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है. अगर आपको फ़ायदा हुआ है, बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ वंडरफुल सेशंस लाइक दिस. ओके, ठीक है. आपको पसंद आया हो तो बिल्कुल आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं ऑन procatindia@gmail.com. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.